Good morning, students. In previous classes, we were discuss about the functions and one more thing, the composition of function. Today, we are going to start new topic: inverse of a function and invertible function. So, what is inverse of a function? To understand this, suppose f is a mapping defined from set A to set B, and image of x is fx, which is also represented by y. That means image of f, an element of set A under f, is y. So a function, if there is a function from set B to set A defined as image of element of set B is an element of set A, then in other word, x is pre-image of y, or x is inverse element of y. X is pre-image of y from set B to A, or x is the inverse element of y. So how we will find the inverse element? For easy questions, you see here mapping or function defined from f natural number to natural number is given by fx is equal to x plus 2. Then find f inverse 1, f inverse 3, etc. To find f inverse 1 is equal to x, f inverse 1 means the pre-image of 1 is x in set. So it means image of fx under f in B is 1. So it means fx is equal to 1. So it is written here. So function fx is given here, fx is equal to x plus 2. So at the place of this we write down x plus 2. We get the from here the value of x is minus 1. X is element of set A, and set A is natural number, but the pre-image of this is what? Minus 1, which is not available in this. That means f inverse minus 1 does not exist in the set A. F inverse minus 3 is equal to x, means the pre-image of element 3 is x. So fx is equal to 3 means x की इमेज क्या रही होगी? 3 रही होगी. fx की प्लेस पे x प्लस 2 रख दीजिए, यू गेट x इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू 1 मिल गई, मीन्स आपको f इनवर्स 3 की वैल्यू 1 मिल गई. इट मीन्स वोट? इट मीन्स the pre-image of 3 is 1 and the image of 1 is 3. Clear? Under f. So this type you can find the inverse element of different sets. Clear? Now next part is we are going to discuss the when a function is invertible. Clear? A mapping f or function f is A to set B, and the image of set A element, any arbitrary element x, is y. So that means y is equal to f x. Clear? So if there is a function g which is defined from set B to set A such that the g of y is equal to element of A, set A. So this g is called inverse. अभी आपने पीछे पढ़ा inverse function of this set B, this mapping. So when you are going to find this g is your inverse function. So it is defined here, a function f from A to B is defined as invertible function if there exists a function g from B to A, एक ऐसा फंक्शन हो जो B to A डिफाइंड हो, सच दैट g of f is equal to identity element of x. Identity element of x, this means this one, identity mapping, and f of g is equal to identity element of y. अगर ऐसा आप शो कर देते हैं, then that function g is inverse function of function f, and the mapping, the function which is defined from set A to set B is invertible.
So the function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse. Means if fx is equal to y, means the image of x is y under f, then f inverse y means pre-image of y under this f inverse, or the function g is x. So that is your inverse function, and that is the method of finding inverse function. That is proper definition. Clear? We are going to take some example. One more thing, you can also prove a function is invertible if you show that just f is 1 1 एंड ऑन टू. जो आपको फंक्शन गिवन है, अगर आप उसको 1 1 और ऑन टू प्रूफ कर देते हैं तब भी वो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा. क्यों? क्योंकि फंक्शन इसमें आपका a टू b डिफाइन है. अगर x की इमेज यहाँ पे y है और y की इमेज x हो रही, तो दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है, 1 1 है एंड ऑन टू है. ठीक है, तो आप 1 1 एंड ऑन टू के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है. अगर 1 1 है, ऑन टू है, मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्शन है, तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन होगा. और जो सेकंड फंक्शन आपका g है वो फंक्शन इनवर्स फंक्शन कहलाएगा, उस ए फंक्शन का, उस एफ फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा. एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू सी इन्वर्टेबल फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड हियर. अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ फ्रॉम जी टू बी सच दैट g of f is identity element of a, means element of a, and f of g is identity element of b. The function g is called inverse and f of f and is denoted by f inverse. So एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किया है. Let a is a set in which y is a arbitrary element belongs to natural number and y is equal to 3x minus 2 for some x belongs to natural number. So that function f आपको शो करना है कि फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू सेट a डिफाइंड बाई fx आपको दे रखा है इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड f इनवर्स, और आपको f इनवर्स भी फाइंड आउट करना है. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको द सेकेंड फंक्शन g इज नॉट गिवन. क्लियर? सो for that let y belongs to a. Y is a arbitrary element of set a, so y belongs to a, so y is equal to 3x minus 2 as given here. So from here we get the x is equal to in terms of y plus 2 by 3. So let g is a function which is defined from a to n. Clear? n to a f फंक्शन डिफाइंड है, तो हम उसको g फंक्शन को देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g सच दैट डिफाइंड फ्रॉम a to n बाय gy. द फंक्शन g इज गिवन है हियर इन टर्म्स ऑफ द y प्लस 2 बाई 3. तो आपको फंक्शन gy भी पता चल गया, fx आपको फंक्शन पहले से दे रखा है. नाउ अब हमें इन्वर्टेबल शो करना है, तो हम क्या शो करें? इन्वर्टेबल के लिए क्या होना चाहिए? g ऑफ f इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ a, मीन्स उसके डोमेन के कोडोमेन के एलिमेंट्स होने चाहिए. एंड f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस. f ऑफ g मीन्स g फॉलोड बाई f. सो g इज डिफाइंड फ्रॉम हियर a to m, सो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ a. अगर हम ऐसा शो कर देते हैं तो हमें क्या हो जाएगा? g इज इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा, एंड g जो g फंक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा. तो हमें g फंक्शन भी आपका इन्वर्स के फॉर्म में निकल आएगा. सो लेट वी स्टार्ट हियर. लेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन g ऑफ fx इज इक्वल टू f फॉलोड बाई g. सो g ऑफ fx एट द प्लेस ऑफ fx फंक्शन वी पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन fx 3x minus 2. सो नाउ g of 3x minus 2 means input at the place of y, input is 3x minus 2, so when you apply you get g of fx is equal to x. So g of f is equal to identity element of what? Identity element of this domain n. Clear? Now for the next part we find let y belongs to a, then f of g
of y is equal to f g of y followed by f. So gy function, that is y plus 2 by, that is f. When you input apply f, that you get this much, and after solving you get f of g is equal to y. So f of g followed by f, that is identity element of a. So it means what? G of f is identity element of n, and f of g is identity element of a. So it means what? F is invertible mapping or function, and g is the inverse of f. So g is the inverse. So g is what? G y is equal to what? Y plus 2 by 3. So this is the inverse function. So g inverse is divided f inverse. So f inverse of x is equal to what? x के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? x plus 2 upon 3. This is written here, f inverse is equal to x plus 2. So inverse function आपका find out हो गया. So that is the method of finding inverse function when the functions are given. So in this way you can find invertible, function is invertible, mapping is invertible, yes, no, or, and inverse of a given function. Thank you.